Morning students, today's topic is Laplace transform. So now start definition. The Laplace transform is a linear operator that switched a function f of t to f of s. Specially, f of s is equals to L of f of t equals to integration infinity to 0 negative e minus st ft dt. So this is your Laplace transform definition. Go from time argument with real input to a complex angular frequency input which is a complex. Now Laplace transform theory, जनरल थ्योरी दी है और उसके साथ एक एग्जांपल दिया है. तो जो उसकी जनरल थ्योरी है वो है सिंपली इन्फिनिटी टू ज़ीरो इंटीग्रेशन ई माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू लिमिट lambda approaches to infinity integration of lambda to 0 e minus st ft dt. E is your exponential. एग्जाम्पल दिया है f of t is equals to 1. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो f of t जो है 1 है. तो जनरल थ्योरी में देखिए यहाँ पर f of t है, वहाँ पर सिंपली हमने 1 पुट कर दिया है और फिर इसकी क्या की है इंटीग्रेशन. अब e माइनस एस टी डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है. तो e माइनस एस टी और जो फंक्शन है वो माइनस एस नीचे आ गया और इसका जो वैल्यूज़ हैं वो है लैम्डा टू 0. तो वैल्यूज़ पुट करके जो आपके पास सोल्यूशन निकल रहा है वो है 1/s. तो ऐसे जो हम फाइंड आउट करेंगे किसी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म थ्योरी में क्वेश्चंस को. द सिस्टम फंक्शन. We know that the output y of t of a continuous time LTI system equals the convolution of the input xt with the impulse response ht, that is y of t is equals to xt dot ht. For Laplace निकालेंगे सिस्टम फंक्शन की, तो that is y of s is equals to x of s h of s. h of s is equals to y of s upon x upon h. Now properties of ROC of Laplace transform. The range variation of sigma for which the Laplace transform converges is called region of convergence. ROC is region of convergence. Region of convergence doesn't contain any poles. If x of t is absolutely integral and it is of finite duration, then R of C is entire S-plane. If xt is a right-sided sequence, then R of C is such that RES greater than sigma of 0. If xt is a left-side sequence, then R of C is less than. If xt is a two-sided sequence, then ROC is the combination of two regions. ये आपके पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होती हैं. सेमीकंडक्टर मोबिलिटी, cold completion in wireless network, beakers vibration on compressed rails, beakers of magnetic and electrical field above the atmosphere. So these are semiconductor mobility. Semiconductors are commonly made with superlattice having layers of differing composition. Needs to determine properties of carriers in each layer, concentration of electrons and holes, mobility of electron and holes. Conductivity tensor can be related to Laplace transform of electron and hole densities. So this is a small topics for Laplace transform. Thank you.